CBSE Mathematics Class 12 Part 1 Exercise 1.3 Question number 9. ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Consider function such that r plus 2 the class interval है -5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 so that function is invertible with inverse f y is equal to root of y plus 6 minus 1 upon 3. अब देखिए सॉल्यूशन में function such that r plus means real number, non-negative numbers. This is to -5 to infinity is given as fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. Let y be an arbitrary element of -5 to infinity. एक y नंबर हमने सेलेक्ट किया इसके क्लास इंटरवल के बीच में. Let y is equal to 9x square plus 6x minus 5. That can also be written like this: 3x square, 3x in bracket whole square plus 2 into 3 x into 1 means 6x की जगह पर हमने ऐसे लिख दिया. प्लस 1 का स्क्वायर -1 कर दिया, एक प्लस 1 किया, एक -1 किया, -5 पहले से ही है. सो इट विल बी y is equal to 3x plus 1 का होल स्क्वायर -6. सो देखिए अभी -5 इज इंक्लूडेड. टू राइट हैंड साइड में चले जाइए अप टू इन्फिनिटी तक. सो 3x plus 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ y plus 6. अब इसको हमने 6 को ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ. सो 3x plus 1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ y plus 6 सॉरी. इन ब्रैकेट मैंने लिखा है एज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5. दिस इम्प्लाइज दैट y plus 6 इज ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू root of y plus 6 minus 1 upon 3. This implies further that x is equal to root y plus 6 minus 1 upon 3. Therefore, the function is on to thereby range f is equal to -5 to infinity. Let us define a function g such that in the class interval of -5 to infinity, r plus means non-negative real numbers, as gy is equal to root y plus 6 minus 1 upon 3. This will be our second equation. फर्स्ट आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है. वी नाउ हैव गोफ GOF(x) will be GFX that can be written as G 9x square plus 6x minus 5, and that can be written further G 3x plus 1 का whole square minus 6, and putting it in 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So we will get here root 3x plus 1 का whole square minus 6 upon plus 6 minus 1 upon 3. That can be further solved like this: 3x plus 1 whole square minus 6 plus 6 minus 1, ये बाहर है स्क्वायर रूट के, अपॉन 3. अब ये प्लस 6 और -6 कैंसिल हो जाएगा.
और इसका स्क्वायर रूट होने के कारण ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। 3x + 1 - 1/3। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। 3x/3 दैट विल बी इक्वल टू x। सो यू विल गेट ix। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फॉग y। फॉग y देखिए, that will be fgy, and it can be further written like this: f root of y plus 6 minus 1/3. So further substitute this value in y is equal to 3x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। यहाँ पर देखिए, इसको पूरे को हमने क्या ले लिया है, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 3x की जगह पर रखा है रूट y plus 6 minus 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। इट इज फर्दर सॉल्व दैट y रूट ऑफ y plus 6 minus 1 plus 1 का होल स्क्वायर, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इसका रूट है, इसका स्क्वायर है इधर, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। देखिए, ये है ना स्क्वायर होने के कारण, पहले मैंने लिखा हूँ रूट y plus 6 का होल स्क्वायर माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू y plus 6 minus 6, it will be equal to y. So IY, identity y. So here we got Ix, identity x, and here we got identity y. From third and fourth, GOF, that is identity real positive number, and for that is also identity. So -5 to infinity. Hence function is invertible, and inverse of f is given by f inverse y, that will be equal to gy, and it will be equal to root of y plus 6 minus 1/3. Let us do it by the second method. देखिए, सेकेंड मेथड में क्या स्टेट करना है, fx is equal to 9x² plus 6x minus 5. That can be further written like this: 3x का होल स्क्वायर plus 2 into 3x into 1 plus 1 minus 5. 3x plus 1 का होल स्क्वायर minus 6. So fx1 is equal to fx2. सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, 3x1 plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 3x2 plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6. minus 6 will be cancelled, so we will get 3x square. 3x1 plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे ओनली। सो दैट विल बी इक्वल टू 3x plus 1 plus 1, 3x1 plus 1, that will be equal to 3x2 plus 1. 1 and 1 will be cancelled, 3 and 3 will be cancelled here. So we will get x1 is equal to x2. So it is 1-1 function. This established that it is a 1-1 function. x plus 1 whole square minus 6. In this expression, we just put x is equal to -5 and work out its value. You will get 190. Put x is equal to -1, you will get -2. Put x is equal to -2, you will get +19. Put x is equal to 0, you will get -5. Put x is equal to 1, you will get 10. Now with the help of this diagram, -5
डोमेन में रखने पर हमें क्या मिलता है, को डोमेन या रेंज, दैट इज 190। -1 रखने पर -2, -2 रखने पर 19, 0 रखने पर -5, 1 रखने पर 10। सो दीज आर द रेंज एब्लिक इमेज एंड को डोमेन है। So codomain is equal to the range. This implies that the function is on-to function. So it is invertible function. So fx is equal to 3x plus 1 whole square minus 6. Y is equal to 3x plus 1 whole square minus 6. This implies that 3x plus 1 whole square, that will be equal to y plus 6. 3x plus 1, that will be equal to root of y plus 6. So 3x will be equal to root of y plus 6 minus 1. X will be equal to root of y plus 6 minus 1 upon 3. So f inverse y will be equal to root of y plus 6 minus 1 upon 3, and this will be the inverse of the function. Hence it is proved. Now come to the question number 10. Let function such that x to y be an invertible function. So that function has unique inverse solution like this. Let function has two inverse. That function has two inverse, that is g1 and g2. Contrary to the given statement, हमने उसका जस्ट जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसका उल्टा ले लिया, g1 और g2 दो है। Therefore, for g1 means fo g1 is equal to fo g2. So f g1 y is equal to f g2 y. So here f and f will be cancelled. Here g1 y is equal to g2 y. g1 is equal to g2. g1 and g2 are the same inverse of function. They cannot be different. Now come to the question number 11. Consider function such that 1, 2, 3, 2 a, b, c given by f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c. Find f inverse and show that inverse of f inverse is equal to f. Now you see the solution. f1 is equal to a, f2 is equal to b, f3 is equal to c. This is our first equation. So 1 will be equal to f inverse a, 2 is equal to f inverse b, 3 will be equal to f inverse c. This will be our second equation. Let other function g is the inverse of f inverse, then g1 is equal to a, g2 is equal to b, and g3 is equal to c. This will be our third equation. So from first and third, we are having f1 is equal to g1, f2 is equal to g2, f3 is equal to g3. This implies that function f is equal to g. Therefore, function is equal to inverse of inverse f function. देखिए inverse of inverse function. Hence proved. For example, you can take the x sin theta will be sin inverse x theta. There this will be also applicable. That's all.